वोसा राउंडअप में खुश आमदीद। आज के वोसा राउंडअप में आपको बताएंगे अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम डोमेस्टिक वायलेंस प्रोग्राम के हवाले से आगाही के लिए इवेंट का अहवाल। दिखाएंगे आपको कि किस तरह घरेलू तशद्दुद के शिकार ख़वातीन इससे महफूज रहने और इससे मुताल्लिक़ मदद हासिल करने के लिए किन इदारों से कैसे और कहाँ रब्ता कर सकती हैं। तो आज का वोसा राउंडअप अपना कम्युनिटी सेंटर के वायलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक़ आगाही के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद अमरीका में बसने वाले उन तमाम लोगों को घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक़ आगाही और मदद हासिल करने के ज़राए से आगाह करना था, जो दियार गैर में रहते हुए मालूमात न होने के सबब तशद्दुद बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। चेयरमैन अपना कम्युनिटी सेंटर परवेज सिद्दीकी ने इवेंट के मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तमाम वाक़यात पर कंट्रोल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म कायम करने की कोशिश की है ताकि तशद्दुद के इन तमाम वाक़यात पर काबू पाया जा सके, जो आम तौर पर हर दूसरे घर की कहानी है, लेकिन उन्हें डिस्कस ना करने के सबब इनकी बीखकनी मुमकिन ना हो सकी। For our community to take advantage of your knowledge and your experience to learn from this. Very often we hear that these events happen in families and they don't, culturally, because of cultural reasons, they don't talk about it. So the opportunity for you to come here and explain and tell them what help is available is a tremendous resource for us and for us also to know and educate ourselves and our staff how we can help them. This obviously is one of the main reasons in our community, because of cultural reasons, we try to shut them up, whatever happens, like Iram just explained. So I think our job is, whatever the issues are, it will only help if you come out and seek help. Our community center is that resource, so we can escalate the help that is needed by reaching out to you, to different services that are available, so we can provide some help and we can save a life. It was very tragic what happened in Long Island and what Sister Afsha explained. If only one person would have reached out and said something, we could have saved the child and the wife of the gentleman. And now it's too late for him, it's too late for the others. There is also, within cultural reasons, the dominant male factor, and for them, that they are the big boss and they don't have to listen to anybody. And for that reason, there are many abuses that cause problems and simmering underneath, and really nobody brings about it. And that is why it is important in this country you have the opportunity to take advantage and educate yourself and become independent enough to know where you can seek help. प्रोग्राम के शुरका को तंजीम और इवेंट के अक़राज़ व मक़ासिद से आगाह करते हुए अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरम हनीफ का कहना था कि हमारा मकसद कम्युनिटी की खिदमत करना और उन्हें महफूज, सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करना और ख़ास तौर पर कम्युनिटी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करना है। आज का ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। घरेलू तशद्दुद के वाक़यात जो हमारी कम्युनिटी में मोस्टली हमारी ज़्यादातर यंग लड़कियों बच्चियों के साथ हो रहे हैं, जो रिसेंटली पाकिस्तान से शादियां करके इधर लाते हैं, उस चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है उनको, तो उसको हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलजुल कर ऐसे लोगों की जो है वो रहनुमाई करें और उनका हाथ थामें और उनके लिए आसानियां पैदा करें। Okay, so I'm gonna also would like to recognize Jenny and Lena from Coney Island Neighborhood Revitalization Project for joining us today. Thank you, Jenny and Lena. We are trying to build and work more closely with other community-based organizations, inshallah soon. शुरका से मुखातिब होते हुए अपना कम्युनिटी सेंटर की नुमाइंदा अफशा का कहना था कि तमाम तर फाइनेंशियल और लीगल सर्विसेज के साथ साथ कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम जेंडर वायलेंस को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर कोई विक्टिम है तो उसे सपोर्ट करने के बजाय उससे सब्र के नाम पर खामोश करवा दिया जाता है कि आप चुप रहें, आप कुछ ना बोलें, ठीक हो जाएगा, 10 साल 20 साल बाद ठीक हो जाएगा। 10 साल 20 साल में या तो वो जहनी अपनी
तवाज़ुन खो बैठती है, या फिर ऐसा होता है कि उसे कुछ इमोशनल बीमारियों का सामना करना पड़ता है, डिप्रेशन या कुछ इस तरह का उसे प्रॉब्लम होती है, या फिर इस तरह भी होता है कि कभी कभी अपनी फिजिकल वो लॉस कर बैठती है, कभी कभी वो जान से भी हाथ धो बैठती है। प्रोग्राम में मधु न्यूयॉर्क सिटी के घरेलू और सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे की डिप्टी कमिश्नर एन पीटरसन का कहना था कि फैमिली जस्टिस सेंटर सिटी के हर बोरों में मौजूद है और ये सेंटर घरेलू तशद्दुद के मुतासरीन को हर तरह की मदद फराहम करता है, जिसमें लीगल सर्विसेज के अलावा पुलिस ऑफिसर्स की मदद से घरेलू तशद्दुद को रोकने तक की सहूलत दी जाती है, जबकि जहनी मसाइल को डील करने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट से रब्ता करवाया जाता है। The Family Justice Centers centralize services to survivors in a single location. And in addition to the good support that survivors receive from Abira here at APNA, if survivors are in need of other services, specifically legal services, so a consultation about how to proceed with a case in family court, information about divorce representation, those services are available at the Family Justice Centers. In addition to legal services, there are domestic violence police officers on site who are available to take a report as well as follow up on the status of an arrest. There's also access to long-term therapeutic counseling at the Family Justice Centers, to access to psychiatrists who can do medication management and other psychiatric treatments there. And there's also services available to children who have been impacted by abusive partner behavior. प्रोग्राम में शरीक चेस बैंक की कम्युनिटी मैनेजर तनीशा ने कम्युनिटी के लिए अपनी सर्विसेज के बारे में आगाही दी। My role as a community manager is to teach financial literacy from kindergarten through senior citizen age, to also partner with community stakeholders, do work at Proximate, volunteer, tabling, events such as this event today. A big piece of the work I do is to pull the thread all the way through, so I don't just leave you knowing that the information is available without access to it. So back in 2020, Chase committed $30 billion. It's a racial equity commitment. So no, it doesn't mean I walk with a check and I'm writing out these big dollar amount checks, but it does provide services and access to services in the communities in which we serve. So that was my role, was birthed out of that commitment. Affordable housing and home lending, small business, minority small business ownership, but more importantly, to bridge the racial wealth gap, right? To make it easier. प्रोग्राम में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के 60 प्रीसिंक्ट से आए डोमेस्टिक वायलेंस पुलिस अफसरान और सेफ होराइजन से ऐना भी मौजूद थी। सेफ होराइजन वो एजेंसी है जिसके हर प्रीसिंक्ट में 2 नुमाइंदे मौजूद होते हैं और लीगल सर्विसेज, चाइल्ड सपोर्ट, फूड शेल्टर, मेंटल हेल्थ से मुताल्लिक जहाँ जहाँ कम्युनिटी को इनकी खिदमात की ज़रूरत होती है, ये मिलकर खिदमात फराहम करते हैं। अक्सर मुतासरीन पुलिस रिपोर्ट फ़ाइल नहीं करवाते, लेकिन अब सेफ होराइजन की फराहम करदा सर्विसेज से मुस्तफ़ीद होने के लिए पुलिस रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी और अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर के साथ मिलकर सेफ होराइजन कम्युनिटी की बेहतर अंदाज में खिदमत करने का अज़्म रखती है। We work very closely with Anna from Safe Horizon, and she provides lots of resources. So this program has 2 advocates at each precinct. One person deals with domestic violence, another person deals with just crime victims. And what I do there, I usually receive a police report and then I make outreach calls to victims of domestic violence and see what we can help. प्रोग्राम में शरीक लीगल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन केयर न्यूयॉर्क के लीगल फेलो बुरहान कैरोल का कहना था कि आज मैं यहाँ जो बात करना चाहता हूँ वो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से ही है। घरेलू तशद्दुद और कानूनी मामलात किस तरह से एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा इदारा इनके लिए क्या खिदमात फराहम करता है, आज इसके बारे में बताऊँगा। Inshallah, our organizations are going to work very closely together in the future. What I want to speak about today, inshallah, is a very particular issue. It's a little bit different from what our speakers have spoken about thus far. It's about the intersection of domestic violence and immigration. If you have a criminal matter or a family matter, I encourage you to make use of the other of my colleagues that are here today. Make use of their services.
And please reach out to us if you have questions with immigration. तकरीब में शरीक सेनेटर एवेंचू के ऑफिस से आई जुनेरा अहमद ने डोमेस्टिक वायलेंस प्रोग्राम के हवाले से अपना कम्युनिटी सेंटर का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम के मौजू को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया। मैं अपना सेंटर को थैंक यू बोलना करना चाहती हूँ कि आज की इवेंट आपकी डोमेस्टिक वायलेंस प्रोग्राम कितना इम्पोर्टेंट ये काम है, कितने इम्पोर्टेंट ये आज का इवेंट है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमें बहुत लगता है कि हम अकेले हैं, कि इस कंट्री में हमारा माँ बाप, फुप्पो, हाला, बहन भाई नहीं है, तो हम जो भी हम डिफिकल्टी में है हम अकेले हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये सच नहीं है। आप अपना कम्युनिटी सेंटर पे आ सकते हैं। प्रोग्राम में अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर की जानिब से डोमेस्टिक वायलेंस से आगाही और इसकी रोकथाम के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में इवेंट के शुरका को प्रेजेंटेशन दी गई। Here we have domestic violence, NGBV right here, then we have AFSC right here that we had workshops in the past. ये हमने मेयर्स ऑफिस एंड डोमेस्टिक एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ ये वर्कशॉप की थी और ये वर्कशॉप हमारी हुई थी AFSC के साथ। This is the workshop that we did in a masjid, that's a mosque, that we try to reach women, reach people where they are, and we try to find them where they are and bring them the resource and information that they need. शुरका ने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ नारे भी लगाए। अपना घरेलू तशद्दुद के खिलाफ है, हम सब घरेलू तशद्दुद के खिलाफ हैं। प्रोग्राम के आखिर में केक भी काटा गया।